Hello students, today I am starting chapter 12, light, shadow, image and reflection. At first, what do you mean by light? From where do we get light? It means सबसे पहले लाइट का मीनिंग क्या होता है और लाइट हम लोगों को कहाँ से प्राप्त होता है. तो लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी. We get light from the sun. Natural sources, artificial sources. This time now already explained point of incidence. Point of incidence क्या होता है? The point at which the incident ray strikes the plane mirror or reflecting surface is called the point of incidence. Next point I already explained, reflected ray. Reflected ray क्या होता है इसके बारे में आज आप लोगों को हम बताने जा रहा हूँ. The ray of light which is reflected back of the stacking at the point of incidence is called the reflected ray. जब कोई भी किरण, कोई भी लाइट अगर शाइनिंग एंड स्मूथनेस सरफेस पर पड़ता है तो उससे जो रिफ्लेक्टेड रे होता है दैट मीन्स रिफ्लेक्टेड रे बैक ऑफ द स्टैकिंग एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस दैट मीन्स रिफ्लेक्टेड रे. नाउ I already explained angle of incidence. The angle between the incident ray and the normal at the point of incidence is called the angle of incidence. It is denoted by I. इसे प्रायः हम लोग आई से डिनोटेट करते हैं. नेक्स्ट पॉइंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड या it means angle of reflection. It is normally denoted by R. Again I am repeating point, angle of reflection. Angle of reflection क्या होता है? The angle between the normal and the reflected ray at the point of incidence is called the angle of reflection. It is normally denoted by R. इसको हम लोग प्रायः R से डिनोटेट करते हैं. Now I am starting point pinhole camera. Pinhole camera is an interesting but simple device which forms the inverted image of a bright object on a screen. Its working
is based on the property of rectilinear propagation of light। पिन होल कैमरा एक इंटरेस्टिंग कैमरा है, बट सिंपल डिवाइसेस भी है, विच फॉर्म्स द इन्वर्टेड, जिससे कि फॉर्म्स होता है, इन्वर्टेड इमेज फॉर्म्स होता है, एंड ब्राइट ऑब्जेक्ट ऑन ए स्क्रीन, और ब्राइट ऑब्जेक्ट स्क्रीन पर होता है। इट्स वर्किंग इज बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ rectilinear propagations of light। Now I am starting next point, some more facts about pinhole camera। कुछ फैक्ट्स हैं पिन होल कैमरा के बारे में जो कि हम आज बताने जा रहा हूँ। पिन होल कैमरा इज ए लो कॉस्ट, इसका कॉस्ट जो होता है वह बहुत ही कम होता है, एंड इजी टू कंस्ट्रक्ट, और आसानी से इसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, इट इज कंस्ट्रक्टेड विदाउट यूजिंग एनी लेंस, इसे कंस्ट्रक्टेड किया जाता है विदाउट यूजिंग एनी लेंस, बिना लेंस का, एंड हेंस द इमेज फॉर्म्ड इज फ्री फ्रॉम डिफेक्ट्स ऑफ लेंस, जिसके कारण कि इसका इमेज जो पड़ता है वह क्या होता है, फॉर्म्ड जो होता है फ्री फ्रॉम डिफेक्ट्स ऑफ लेंस होता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, पिन होल कैमरा हैविंग वाइडर, पिन होल कैमरा जो होता है वह क्या होता है, वाइडर होता है। प्रोड्यूसेस ब्लर्ड इमेज, जो कि ब्लर्ड इमेज होता है जिसे हम लोग स्पष्ट रूप से देख नहीं सकते हैं। अगेन आई एम रिपीटिंग पॉइंट 3, पिन होल कैमरा having wider, pinhole produces blurred image। Now next point 4, pinhole camera cannot take pictures of moving objects, it can only take pictures of static objects। Again I am repeating point number 4, pinhole camera cannot take pictures of moving objects, it can only take pictures of static objects। pinhole camera cannot take pictures, वह क्या होता है, pinhole कैमरा पर cannot take pictures of moving objects होते हैं, it can only take pictures, यह केवल पिक्चर्स को ले सकते हैं, of static objects। Now next point number 5, the required exposure time for a pinhole camera is too large। required exposure time जो है for a pinhole camera is too large, वह ज़्यादा समय को लेते हैं। Now next point, इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे क्या होता है, ए रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम ए सोर्स, ए रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम ए सोर्स स्ट्राइकिंग ए गिवन रिफ्लेक्टिंग surface is called the incident ray। Again I am repeating this point, incident ray, a ray of light coming from a source, लाइट का जो रे होता है उसका सोर्स जो होता है स्ट्राइकिंग ए गिवन रिफ्लेक्टिंग सरफेस
इज कॉल्ड द इंसिडेंट रे। ये सारे पॉइंट्स को आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लेंगे। थैंक्स।